सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। समूहस्यास्य संस्थापकाः परम पूज्याः गुरुकल्पाः तेषां पुनः पौनः पौन्येन आभारं सविज्ञाय एवं चात्र समूहे समुपस्थितान् सर्वानपि स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतं भारतमिति समूहपक्षतः भवन्तः जानन्ते वा, अहमत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य प्रारम्भतः अध्यापनार्थम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। तत्र मङ्गलाचरणोपरि विचारः प्रचलति। अद्य नवम पाठः अस्ति मन्ये। तत्र मङ्गलाचरणोपरि विचारः चरमावस्थायामेव प्रचलति, यतोहि अतिसंक्षेपेणैव सर्वं प्रतिपाद्यते अस्माभिः। अत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च, अतः अत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इत्योपरि विचारः सञ्जातः वर्तते। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति अवशिष्टं वर्तते। तत्रापि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वैयाकरण इति पदस्य विचारः सञ्जातः वर्तते। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति समस्तं पदं वर्तते। अत्र घटकतया त्रयः शब्दाः प्रविष्टाः सन्ति। वैयाकरण इति, पुनः सिद्धान्त इति, ततः कौमुदी इति। तत्र वैयाकरण पदस्य को अर्थः कथञ्च निष्पत्तिः भवति इति सर्वमेतत् प्रतिपादितम् अस्माभिः। पुनः व्याकरणमधीते वेत्ति वा इति वैयाकरणः, है कि नहीं? लक्ष्यलक्षणं व्याकरणं, लक्ष्यलक्षणम् इत्येतत् समुदितं व्याकरणं, नापि लक्षणं व्याकरणम् इति एवं रीत्या व्याकरणपदार्थः विचारितः। एवमेव च अतः वैयाकरणपदस्यापि निष्पत्तिः कथं भवति, कस्य अर्थः भवति इत्यपि प्रतिपादितः अस्माभिः। तत्र व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा इति वैयाकरणः, तत्र तदधीते तदवेद वा इत्यनेन अणादिप्रत्यये कृते सति तस्य निष्पत्तिः भवति। ततः सिद्धान्तपदस्य च कः अर्थः इत्यपि प्रतिपादितः, यतोहि तस्य शब्दस्यापि अर्थः बहुधा शास्त्रेषु चर्चितं वर्तते। तत्र सिद्धान्त इत्यस्य अर्थः सिद्धः, असेधिति सिद्धः, सिद्धः निष्पन्नः, अन्तः निर्णयः, येषाम् अर्थानां ते अर्थाः सिद्धान्ताः। ततः सिद्धान्त अथवा वादिप्रतिवादिभ्यां निर्णीतत्वेन आक्षेपरहितो अर्थः सिद्धान्तः। ततः वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरणसिद्धान्तः इति एवं रीत्या तत्र समासः भवति। वैयाकरणपदस्य सिद्धान्तपदेन सह एवं रीत्या षष्ठीसमासः भवति। तथा च तत्र षष्ठ्यर्थः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धोऽपि मया प्रतिपादितः। वैयाकरणप्रतिपाद्यः यः सिद्धान्तः इति वैयाकरणसिद्धान्तः, तत्र षष्ठीसमासः वर्तते। अथवा तत्र वैयाकरणा एव सिद्धाः इति वैयाकरणसिद्धाः, वैयाकरणा एव सिद्धाः सन्ति। अतः वैयाकरणसिद्धाः तेषाम् अन्तः निर्णयः येषु अर्थेषु ते अर्थाः वैयाकरणसिद्धान्ताः इति एवं रीत्या वैयाकरणपदस्य सिद्धपदार्थेन सह सिद्धपदेन सह तत्र विशेषणं विशेषेण बहुलं तत्र समानाधिकरणसमासः क्रियतां। वैयाकरणाभिन्न सिद्ध तेषां तत् प्रतिपाद्याय निर्णीतार्थाः इति वैयाकरणसिद्धान्ताः इति वैयाकरणसिद्धान्तपदस्य तदा अर्थः निष्पद्यते। अथवा वैयाकरणाः सिद्धाः यैः इति वैयाकरणसिद्धाः, अर्थात वैयाकरणाः
यैः सिद्धाः वर्तन्ते सः अथवा ते किं भवन्ति, वैयाकरण सिद्धाः भवन्ति। अर्थात इसका अर्थ है कि वैयाकरण जिनके द्वारा सिद्ध हैं वो क्या है, वैयाकरण सिद्ध है। इस तरह से वैयाकरण का सिद्ध के साथ क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास करते, वैयाकरणाः सिद्धाः यैः, वैयाकरण सिद्ध है जिनके द्वारा, अथवा भगवान विश्वनाथ के द्वारा सिद्ध हैं, तो वैयाकरण सिद्धाः भगवान विश्वनाथः तेषां भगवत विश्वनाथानां अंतः निर्णीतार्थः वैयाकरण सिद्धांताः इति अर्थः आगच्छति। अथवा वैयाकरणाः सिद्धा यही पद से आप अणिमा महिमा अष्टसिद्धियाँ जो है वो भी ले सकते हैं, किंतु सा अर्थः न संघटते। किंतु वैयाकरणाः सिद्धा यही भगवान विश्वनाथैः सह ते वैयाकरण सिद्धाः भगवन्तः विश्वनाथः, तत्र पुनः तेषाम् अन्तः निर्णयः येषु अर्थेषु ते अर्थाः वैयाकरण सिद्धान्ताः। अतत्र भगवदिच्छीय विषयता तु सर्वेषु अर्थेषु भवत्येव। तस्मात् वैयाकरण सिद्धान्ताः इत्युक्ते वैयाकरण सिद्धा यैः तादृशकरणीभूत भगवान विश्वनाथस्य निर्णीतार्थाः इति वैयाकरण सिद्धान्ताः इति पदस्य निष्पत्तिः भवति, तथा अर्थश्च भवति तस्य। अतः एवं रीत्या तत्र सिद्धान्त शब्दस्य अर्थः कः इति बहुधा शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते, चर्चितं वर्तते। पुनः कौमुदी इति पदं वर्तते, वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी, तस्य अर्थः कः, वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी इत्यत्र कौमुदी पदस्य कः अर्थः, तर्हि वदामि। कौमुदी पदस्य तत्र कौमुदी पदेपि शब्दद्वयं वर्तते, एकः कु इति, द्वितीयश्च शब्दः मुदिति। मुदि तस्मादेव भवति तत्र कौमुदी इति सिद्ध्यति। कथं वदामि सर्वं। तत्र कु इति वर्तते, कु शब्दस्य कौमुदी इत्यत्र कु प्रथमम् अस्ति, ततः वृद्धियादि भवति, तथा कौमुदी इति भवति। कौमुदी पदस्य कौ प्रथमं कु पदस्य निष्पत्तिः क्रियते। कु इति इत्युक्ते पृथिवी भवति। कथं कु इति शब्दस्य अर्थः पृथिवी भवति। कौमुदी इत्यत्र शब्दद्वयं वर्तते, कु इति अमुद इति। तत्र कु शब्दस्य कः अर्थः, मुद् इत्यस्य कः अर्थः, तदनन्तरं कौमुदी इति पदस्य कः अर्थः, कथञ्च तस्य सिद्धिः भवति इति सर्वं वदामि। तत्र कु इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते, कौ पृथिव्यां मोदन्ते कामयन्तः जनः इति कु। प्रथमं कु इति सिद्धीकरोमि। तत्र कामयन्तः जनः यस्यां सा किं भवति, कु भवति। कम धातुर् कमेर् डुः इत्यनेन किं भवति, डु प्रत्ययः भवति। कम धातोः कमेर् डुः इत्यौणादिकसूत्रेण किं भवति, डु प्रत्ययः भवति। कामयन्तः जनाः यस्यां सा कुः, अर्थात पृथ्वी जिसमें लोग प्रसन्नता से रहते हैं, प्रसन्नीभूत जो जन हैं, लोक हैं, तदधिकरणीभूता या वर्तते सा पृथ्वी कुः। ये तो पृथ्वी में ही लोग आनंद से रहते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, मंगल ग्रह, चंद्रमा ग्रह, वहाँ जाते हैं, वहाँ से आते ही आ ही नहीं पाते बेचारे, अथवा वहीं चले गए, या तो सांस वायु नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, अथवा कुछ हो गया तो खो गए बेचारे। तो एक ऐसा यही पृथ्वी ग्रह है जहाँ पर क्या हो, लोग क्या होते हैं, आनंद के साथ मनुष्य जो है, जन जो है व्यतीत करते हैं। अतः कामयन्तः जनाः यस्यां सा कुः पृथ्वी, जिसमें लोग आनंद से रहते हैं, आनंदाश्रयाभिभूताः जनाः यस्यां किं कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति, सा कु पृथ्वी, वो पृथ्वी है। फिर
ये तो कमेर डू से क्या हो गया, डू प्रत्यय हो गया। डू में क्या होता है, डू में डी किया गया, अतः डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टीर्लोपः इति धिया तत्र किं भवति, कम धातोः टीर्लोपः। कम का डू भवति, मेलने कृते डू इत्यत्र उ तिष्ठति, तर्हि क उ मिलति कुः भवति, तर्हि कुः इति सिद्ध्यति। कु शब्दस्य अर्थः पृथिवी। तर्हि पुनः मुद अग्रे वर्तते, मुद वर्तते, तत्र मुद इत्यस्य सिद्धिः करणीया। तर्हि मुद शब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति चेत् उच्यते तत्र मोदनं मुद संपदादिभ्यः क्विप् इत्यनेन किं क्रियते, क्विप् प्रत्ययः क्रियते। कुत्र, भावे अर्थे, मोदनं मुद इति। ततः कुमुद इति जातं। किं जातं, कुमुद इति जातं। ततः किं क्रियते, बहुव्रीहि समासः क्रियते। पंचम्यर्थे बहुव्रीहि क्रियते, तृतीयार्थे अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु पंचम्यर्थे तृतीयार्थे वा बहुव्रीहि क्रियते। कौ पृथिव्यां मुद आनन्दः यस्मात् अथवा एनवा इति कुमुद, कुमुद शब्द से निष्पत्ति हो। कौ पृथिव्यां मुद आनन्दः यस्मात् स किं भवति, कुमुद भवति। अब देखिए, पृथ्वी में आनंद हर्ष होता है जिसके द्वारा, जिसके कारण, यस्मात् है कि नहीं, वो क्या है, कुमुद है। किसके कारण, चंद्रमा के कारण। यहाँ तात्पर्यवशात् किं क्रियते, चंद्रमा गृह्यते। तर्हि पृथिव्यां कौ पृथिव्यां मुद आनंदः यस्मात् स किं भवति, अर्थात पृथ्वी में आनंद का जो साधन है, जिससे होता है, वही क्या है, कुमुद है, चंद्र है। तो कुमुद का अर्थ हो गया चंद्र। फिर कुमुद ये हलंत शब्द है। तस्येदम इस सूत्र के द्वारा आण प्रत्यय हो जाता है। तस्येदम इस सूत्र के द्वारा आण प्रत्यय हो जाता। तो कुमुदः इयं, कुमुदः इयं कौमुदी षष्ठ्यन्तात् किं भवति, षष्ठ्यन्तात् समर्थ सुबन्तात् इदम इत्यर्थे अण प्रत्ययः भवति। इदम में पूरा संसार प्रविष्ट है। इदम शब्द से पूरा संसार कह सकते हैं, संसार। अतः इदम शब्द में पूरा संसार प्रविष्ट हुआ। अतः इदम शब्द से क्या ले लेंगे, ज्योत्स्ना भी ले लेंगे, है कि नहीं। तो कुमुदः चंद्रस्य इयम इति कौमुदी, अर्थात चंद्र संबंधी। अतः कौमुदी, कुमुद शब्द से क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, कुमुद अण मिला दो, कुमुद अड़ा चला गया, कुमुद। अब अग्र किं क्रियते, आद्यचः वृद्धि क्रियते, तर्हि किं भवति, कौमुद, कौमुद। ततः टिड्ढाळ इत्यनेन किं क्रियते, गी प्रत्ययः क्रियते, अकारादि लोपे च कृते मिलने च कृते कौमुदी पदस्य निष्पत्तिः भवति। कौमुदी शब्दस्य अर्थः भवति ज्योत्स्ना। अमरकारेणापि उक्तं चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरः। चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरः। कौमुदी का अर्थ चंद्रिका होता, ज्योत्स्ना होता। तो अब देखिए, कौमुदी का अर्थ क्या हो गया, ज्योत्स्ना। कौमुदी का अर्थ क्या हुआ, ज्योत्स्ना। कौमुदी का अर्थ हुआ चंद्रिका। ये तो कुमुद बने चंद्र हुआ था। अतस्य इयम, तत्संबंधी जो है, तस्य इयं शक्ति ही कौमुदी। कौमुदी इत्युक्ते ज्योत्स्ना, चंद्रिका। तो कौमुदी शब्द का क्या अर्थ हुआ, चंद्रिका, ज्योत्स्ना। अब देखिए, एक तो इस तरह से कौमुदी शब्द की निष्पत्ति हो गई कि कुपद मुद धातु है। मुद धातु से क्या किए, भाव में संपदादिभ्यः कुप से कुप कर दिए, अस्कुप का सर्वपहारी लोप हो जाता है, जिससे कुमुद बनता है। फिर बहुब्रीहि समास कर देते हैं। कौ पृथिव्यां मुद आनंदः यस्मात् स कुमुद,
अब फिर तस्सेदम से क्या कर देते हैं, कुमुदः यम शक्ति ही कौमुदी कौमुद आदेश को वृद्धि होकर के गीप होकर के कौमुदी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है चंद्रिका। अथवा इसी में और क्या कर सकते हैं, मुद धातु से क्विप करते हैं संपदादिभ्या से, किस अर्थ में, भाव में, जैसे संपद विपद आपत इत्यादि स्थल में। और भी कर सकते, मुद धातु से क्या कर सकते हैं, करण अथवा कर्ता अर्थ में क्या कर सकते हैं, करणे कर्तर्यार्थे किं क्रियते बाहुल्यकात् तत्र क्विप क्रियता। तो वहां करण और कर्ता में भी कर सकते हैं क्विप, तो भी कुमुद बनेगा। तो कौ पृथिव्याम मुद, वहां पर वो विग्रह होगा, कौ पृथिव्याम मुद, मतलब मुद का मतलब होगा, मुद माने आनंद करणीभूता का चंद्रमा, तर्हि एवं अर्था भविष्यति तत्र। और भी कर सकते हैं, का प्रत्यय कर सकते हैं, किससे, इगुबुधा ज्ञा प्रीकिरः कः, इसके द्वारा इगुपद धातु है ना, मुद धातु, मुद धातु किं वर्तते, इगुपद धातु वर्तते, उबधायाम किं वर्तते, इक वर्तते, मुद इत्यत्र यतोहि किं नाम उबधात्वं चेत् समुदाय विशिष्टत्वम् उदात्, यत्किंचित् समुदाय विशिष्टात्वम् उदात्तं तत्र वैशिष्ट्यं च सघटकत्व सघटकान्त्य लभ्येत पूर्वतरिधिया अनन्तात् पूर्वधा इति सूत्रेण किं भवति, मुद इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यः उकारः वर्तते तस्य उपधा संज्ञा भवति, अतः इकुपधायां वर्तते, तस्मात् इकुपध धातु मुद धातु, अतः इकुपधाज्ञा इत्यनेन किं कर्तुं शक्यते, का प्रत्ययः अपि कर्तुं शक्यते। तर्हि मुदः इति भवति, मुद इति यदन्तः भवति तस्मात् स्वादित्पत्ति कृते च मुद इति भवति, मुदः इति भवति। पुनः तत्र ततः कुमुद इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति, ततः तस्येदम् इत्यनेन किं क्रियते, याण् प्रत्ययः यदि क्रियते तर्हि विग्रहः कर्तव्यः कुमुदस्य इयं शक्ति कौमुदी, कुमुदस्य इयं शक्ति कौमुदी इति एवं रीत्या करणीयम्। पुनः किं भवति, कौमुदी, कौमुदी पदस्य अर्थः अधुना जातः, कः, चंद्रिका। अत्र अग्रे जानीमः भो, कौमुदी पदस्य तु अर्थः कः वर्तते, चंद्रिका, यतो कोशेपि कोशकारेणापि उक्तं कौमुदी चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरः इति धिया तत्र कौमुदी पदस्य ज्योत्स्ना चंद्रिका इत्यर्थः आगच्छति। तर्हि अत्र एका बहवी समस्या भवति, कथम् इति चेत् वदामि, शृण्वन्तु। प्रथमं किमस्ति, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अत्र किमस्ति, विरच्यते इति पदं वर्तते, विरच्यते इति किमस्ति, क्रियाबोधकं पदं वर्तते, विरचन क्रियाबोधकं पदं विरच्यते इति वर्तते। विरच्यते इति किमस्ति, विरचन क्रियाबोधकं वर्तते। अग्रे तस्यार्थोपरि विचारः भविष्यति, प्रथमं सामान्यतया वदामि, तस्य विरचनक्रिया वर्तते। अतः बोधक धातुः अत्र वर्तते, विपूर्वक रच धातुः। तत्र विरचनक्रिया किं भवति, क्रिया कुत्र भवति, कर्तर्ये भवति। अतः विरचनक्रिया किं वर्तते, कत्र कर्तारं विना अनुपपन्ना वर्तते। यतोहि तत्र क्रिया तु सर्वदैव कुत्र तिष्ठति, आश्रये एव तिष्ठति, क्रियाश्रये एव तिष्ठति। क्रियाश्रयः कः भवति, कर्ता भवति। अतः अत्र वदामि, तत्र भट्टो कर्तृपदस्य अत्र किं नास्ति, पाठः नास्ति, उल्लेखः नास्ति अस्मिन् मङ्गलाचरणे। अतः अत्र कर्तृपदस्य आक्षेपात् लाभः भवति। तत्र कथम् आक्षेपः भवति कर्तृपदस्य इति प्रथमं वदामि। तत्र विरचनक्रियायाः बोधकं पदं, बोधकः धातु वर्तते रच धातु, विपूर्वक रच धातु इति। तत्र विरचनक्रिया किमस्ति, कर्तारं विना अनुपपन्ना वर्तते। तत्र अर्थापत्ति प्रमाणेन कर्तृपदस्य आक्षेपः भवति।
तत्र किं नाम अर्थापत्ति प्रमाणम? तर्हि येन विना यदनुपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते अथवा अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तद उपादकीभूत अर्थांतर कल्पनमर्थापत्तिः। तर्हि अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तदुपादकीभूत अर्थांतर कल्पनम अर्थापत्तिः इति धिया अनुपपद्यमानः एकः अर्थः भवति, एकश्च तद उपपादकीभूतः अर्थः भवति। किं भवति? एकः अनुपपद्यमान अर्थः भवति, एकः तद उपपादकीभूतः अर्थः भवति। यथा पश्यन्तु, देखिए आप सभी जानते हैं लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते। पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते, अर्थात ये देवदत्त पीना है, पीन वाला है, अर्थात मोटा है, किंतु क्या नहीं है? दिन में नहीं खाता। अच्छा खासा मोटा तगड़ा, लेकिन क्या नहीं करता है? दिन में नहीं खाता। तो इससे क्या पता चलेगा? कोई भी सामान्य लोग भी क्या कर लेगा? उसका पता करेगा कि क्या इसका मतलब, वो समझ लेगा कि इसका मतलब दिन में नहीं खाता, मतलब मोटा तगड़ा है तो रात में तो खाता ही होगा, शाम सवेरे खाता होगा, रात में खा लेता होगा। इसीलिए क्या है? दिन में नहीं खाता, अपना सोता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है? पीनो यम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते। अत्र किम कस्य आक्षेपः भवति? रात्रि भोजनस्य। तर्हि अत्र पश्यन्तु किमस्ति? अर्थात् एकः अर्थः किं भवति? अनुपपद्यमान अर्थः भवति, अपरश्च तद उपपादकीभूतः अर्थः भवति। तथैव अत्र पश्यन्तु दिवा भुञ्जानत्व अत्र पीनो यम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते इत्यत्र अनुपपद्यमानार्थः कः? तदुपपादकीभूतः अर्थः कः? तथैव विरच्यते इत्यत्रापि ज्ञातव्यम्। पूरे विरच्यते इत्यत्रापि तथैव वर्तते। तत्र प्रथमं दिवा पीनो यम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते इत्यत्र पश्यामः। तत्र दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वं किं वर्तते? अनुपपद्यमान अर्थः वर्तते। अनुपपद्यमान अर्थः कः इति चेत् दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वम् इति एवं भूतः यः अर्थः वर्तते सा अनुपपद्यमान अर्थः वर्तते। केन विना अनुपन्नः? रात्रिभोजनेन विना अनुपन्नः। यतो हि यदि भोजनं न करोति चेत् एतस्य अर्थस्य उपपत्तिः न भवितुमर्हति। कस्य? दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य देवदत्त पीनत्वस्य, देवदत्तस्य पीनत्वं वर्तते तस्य उपपत्तिः न भविष्यति। केन? रात्रिभोजनेन विना। तस्मात् अत्र अनुपपद्यमानः अर्थः कः वर्तते? दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वम्। अत्र किं वर्तते? अनुपपद्यमानः अर्थः वर्तते। तद उपपादकीभूतः अर्थः कः? तद उपपादकीभूतः अर्थः कः? रात्रिभोजनम्। यतो हि रात्रिभोजनेनैव दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वरूपस्य अर्थस्य उपपत्तिः भवति। यदि रात्रिभोजनं न करोति चेत् दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वस्य अनुपत्तिर् न भविष्यति, उपपत्तिः न भविष्यति। अतः अत्र दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वं वर्तते, तस्य उपपादकं किं वर्तते? रात्रिभोजनम्। अतः अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् अस्य संघटनं करणीयम्। अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तदुपादकीभूत अर्थांतर कल्पनमर्थापत्तिः। अत्र अनुपपद्यमान अर्थः दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वम्, अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तदुपादकीभूतस्य अर्थांतरस्य इत्युक्ते रात्रिभोजनस्य कल्पनं क्रियते, आक्षेपः क्रियते। केन भवति? अर्थापत्तिः भवति। सैव अर्थापत्तिः। अतः
अर्थापत्ति प्रमाणेन यथा पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र किं भवति रात्रिभोजनस्य आक्षेपः भवति तद्वदेव किं भवति अत्रापि अर्थापत्ति प्रमाणेन अथवा येन विना यदनुत्पन्नं तत्तेन आक्षिप्यते येन विना इत्युक्ते रात्रिभोजनेन विना यदनुपन्नम् इत्युक्ते दिवाभुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपन्नम् अतः तत् तेन आक्षिप्यते तत् इत्युक्ते दिवाभुञ्जानत्व विशिष्ट तत् तेन आक्षिप्यते इति रात्रिभोजनं किं क्रियते तेन इत्युक्ते दिवाभुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य यत् पीनत्वं वर्तते तेन आक्षिप्यते अतः अत्र रात्रिभोजनस्य आक्षेपः भवति तद्वदेव मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इत्यत्र विरचन क्रिया वर्तते किन्तु कर्तृपदं नास्ति तर्हि अत्रापि अर्थापत्ति प्रमाणेनैव तस्य कर्तृपदस्य आक्षेपः भवति कथं तर्हि अनुपपद्यमान अर्थदर्शनात् तदुत्पादकीभूत अर्थांतरकल्पनमेव अर्थापत्तिः यहाँ पर अनुपपद्यमान अर्थः कः वर्तते कश्चित् उदुपादकीभूतः अर्थः वर्तते इत्येतत् ज्ञातव्यम् इति एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यम् तर्हि अत्र विरच्यते इत्यत्र विरचनक्रिया एव किं वर्तते अनुपपन्ना वर्तते अनुपपद्यमान अर्थः विरचनक्रिया यतोहि विरचनक्रिया कर्तरि एव तिष्ठति तस्मात् तत्र कर्तुः अभावात् तत्र विरचनक्रिया अनुपपन्ना वर्तते अतः अनुपपद्यमान अर्थदर्शनात् इत्युक्ते किमर्थं विरचनक्रियारूप अनुपपद्यमानस्य अर्थस्य दर्शनात् तदुत्पादकीभूतस्य कर्तृपदस्य आक्षेपः क्रियते अथवा येन विना यदनुपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते इति प्रसिद्धमेव वर्तते येन विना इत्युक्ते येन विना यदनुपन्नं तर्हि कर्तृपदेन विना यदनुपन्नम् इत्युक्ते विरचनक्रिया अनुपन्ना वर्तते कर्ता विना किं वर्तते विरचनक्रिया अनुपन्ना वर्तते अतः तत्तेन आक्षिप्यते तत्युक्ते कर्तारं या कर्तुः किं भवति तेन इत्युक्ते विरचनक्रियया आक्षेपः भवति तर्हि अत्र कर्तृपदस्य आक्षेपः भवति केन अर्थापत्ति प्रमाणेन पुनः वदति भो आक्षेपः क्रियतां कर्तृपदस्य किन्तु भट्टोजिदीक्षितस्यैव किमर्थम् आक्षेपः क्रियते अत्र कर्तृपदेन भट्टोजिदीक्षितस्यैव किमर्थम् आक्षेपः क्रियते अरे कर्तृपदेन देवदत्तस्य आक्षेपः क्रियतां देवदत्तेन विरच्यते है कि नहीं रामेण विरच्यते श्यामेण विरच्यते तत्र बहवः सन्ति तत्र कर्तृपदेन कस्यापि आक्षेपः भवतु किमर्थं तत्र विरचनक्रियया कर्तृरूपेण श्रीमान् दीक्षित महोदयस्यैव आक्षेपः किमर्थं भवति किमर्थं श्रीमान् दीक्षित महोदयस्यैव आक्षेपः भवति इति चेत् तत्र वक्तव्यं नास्ति भो तत्र किमस्ति अत्र तत्र मन्ये अत्र कर्तृपदस्य दीक्षित महोदयस्य उल्लेखः न वर्तते किन्तु अग्रे कृदन्तस्य अन्ते किं वर्तते मंगले श्लोकः वर्तते तत्र दीक्षित महोदयस्य उल्लेखः वर्तते तत्र ग्रन्थकर्तुः नाम वर्तते तत् किम् इति चेत् वदामि भट्टोजिदीक्षित कृतिशैषा सिद्धांत कौमुदी प्रत्यय भूयात् भगवतो भवानी विश्वनाथयोः इति एवं रीत्या तत्र मंगलाचरणं वर्तते अतः तत्र भट्टोजिदीक्षित कृतिशैषा इत्युक्ते भट्टोजिदीक्षित इत्यस्य नाम तत्र लिखितं वर्तते अतः यन् सिद्धांत कौमुदी भट्टोजिदीक्षित कृतिरेव वर्तते इति धिया अत्र
विरच्यते इत्यनेन विरचनक्रियया किं भवति भट्टोचितस्यैव कर्तुः आक्षेप भट्टोचितरूपः यः कर्ता वर्तते तस्यैव आक्षेपः भवति न तु अन्यस्य देवदत्तस्य श्यामस्य कृष्णस्य रामस्य अन्यस्य वा। तर्हि अत्र भट्टोचितरूप कर्तुः आक्षेपः क्रियते। तर्हि आक्षेपात् भट्टोचित कर्तुः कर्तृपदस्य लाभः भवति। तर्हि भट्टोचितेन विरच्यते इति भवति। किं भवति भट्टोजिदीक्षितेन विरच्यते। किं विरच्यते चेत् कौमुदीं विरच्यते इति भवति। अत्र पश्यन्तु तत्र भट्टोजिदीक्षित कर्तृक या विरचन क्रिया वर्तते का वर्तते भट्टोजिदीक्षित कर्तृक विरचन क्रिया वर्तते। तस्यामेव क्रियायां विरचन क्रियायां किं भवति कौमुदी पदार्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः भवति। कौमुदी कर्मिका अथवा कौमुदी निष्ठ कर्मता निरूपिका भट्टोचित कर्ता निरूपिका च विरचन क्रिया इति बोधः भवति। इति एवं रीत्या बोधः भवति। तत्र किं भवति कौमुदी पदार्थस्य किं भवति विरचन क्रियायां कर्मत्व संसर्गेण अन्वयः भवति। कर्मता निरूपकत्वेन अन्वयः भवति। स तु न संभवति। अधुना स तु न संभवति। वह संभव नहीं है। आप ही बताइए कैसे। ज्योत्स्ना का कर्ता थोड़ी है। कौमुदी का अर्थ हो गया ज्योत्स्ना। कौमुदी का क्या अर्थ हुआ था अभी बताए थे चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरा। चंद्रिका अर्थ है कौमुदी का, ज्योत्स्ना अर्थ है कौमुदी का। तो कौमुदी का अर्थ क्या हुआ ज्योत्स्ना चंद्रिका। अब बताइए चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना का कर्ता कैसे भट्टोचित जी हो सकते। अतः भट्टोजिदीक्षित निष्ठ कर्तृता निरूपिका या विरचन क्रिया वर्तते तस्यां क्रियायां कौमुदी पदार्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः न भवितुमर्हति। कर्मत्वेन अन्वयः न कर्तुं शक्यते। कर्मत्वेन अन्वयः अनुपपन्नः वर्तते। तस्मात् कौमुदी पदार्थस्य भट्टोचित निष्ठ कर्तृता निरूपिका या विरचन क्रिया वर्तते तत्र कर्मत्वेन अन्वयः अनुपपन्नः। अतः तत्र अन्वय अनुपपत्तौ लक्षणम् अन्वय अनुपपत्तौ लक्षणा भवति। यदा अन्वयस्य संबंधस्य पदार्थद्वय संसर्गस्य अनुपपत्तिः भवति तदा किं भवति लक्षणा भवति। तर्हि यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगा घोषयोः आधाराधे भाव संबंधेन अन्वयः न भवति। अतः गंगापदस्य तटे लक्षणा भवति। तद्वदेव प्रकृतस्थलेपि किं भवति गंगा कौमुदी पदार्थस्य भट्टोचित निष्ठ कर्तृता निरूपिका या विरचन क्रिया वर्तते तत्र कर्मत्वेन अन्वयः न भवति। अन्वयः अनुपपन्नः। अतः किं भवति क्या होता है वहां लक्षणा हो जाती है। तो कहा भैया गंगायां घोषा में तो आपने बताया कि क्या है क्योंकि घोष पदार्थ क्या है वहां भी अन्वय अनुपत होता अन्वय की अनुपत्ति होती है क्योंकि घोष क्या है आभीर पल्ली घोष होता है और गंगा मने होता भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह जिससे क्या है उस जल प्रवाह में घोष नहीं रह सकता है। जल प्रवाह उस घोष का अधिकरण नहीं हो सकता है। घोष उसका आधेय नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं वहां गंगा पद की तट में लक्षणा कर देते। केन संबंधेन सामीप्य संबंधेन। तर्हि सामीप्य संबंध के द्वारा वहां गंगा पद की किसमें लक्षणा कर देते हैं तट में। अतः तत्र सामीप्य संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका लक्षणा वर्तते गंगापदे। गंगापदे कीदृशी लक्षणा वर्तते
सामीप्य संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका लक्षणा वर्तते। अतः शुद्धा लक्षणा इति पदेनापि तत्र उच्यते। यतो हि शुद्धा का नाम शुद्धा लक्षणा चेत् तर्हि शास्त्रे सुवर्णितं वर्तते सादृश्येतर संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका लक्षणा शुद्धा लक्षणा अस्वनुरूपति सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका लक्षणा गौणी लक्षणा यथा सिंहो माळवकः इत्यादि स्थलेषु। तत्र सिंह शब्दस्य सिंह सदृशे माळवके लक्षणा भवति, तत्र सादृश्य संबंधेन माळवके लक्षणा भवति। अतः एतत् सर्वं बहु विचारः वर्तते, न वदामि। पुनः प्रकृतस्थले आगच्छामि। यथा कौमुदीपदस्य तत्र कौमुदीपदार्थस्य विरचनक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयः न सम्भवति, अतः अन्वयः अनुपपन्नः वर्तते। अन्वयानुपत्तौ लक्षणा भवति, वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपत्तौ एव लक्षणा भवति। तत्र तात्पर्यं वर्तते दीक्षितमहोदयस्य ग्रन्थरूपस्य कर्मत्वेन अन्वयः विवक्षितः वर्तते। अतः तत्र तात्पर्यानुपत्तिरपि वर्तते, अपि च अन्वयानुपत्तिः चेत् अन्वयस्य अनुपत्तिः तु अस्त्येव। एवं रीत्या किमस्ति तत्र लक्षणा भवति। तर्हि वदतु कौमुदीपदस्य कुत्र लक्षणा भवति, कौमुदीपद की कहाँ लक्षणा होगी, किस संबंध से होगी। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र किं भवति, सामीप्य संबंधेन गंगापदस्य कुत्र लक्षणा भवति, तटे भवति। तद्वदेव प्रकृतस्थले कौमुदीपदस्य कुत्र लक्षणा भवति, केन संबंधेन भवति। तर्हि वक्तव्यं कौमुदीपदस्य सादृश्य संबंधेन ग्रंथे लक्षणा भवति। केन संबंधेन लक्षणा भवति, कुत्र भवति, तो कौमुदीपदस्य यः चंद्रिकार्थ प्रतिपादकं यत् कौमुदीति पदं वर्तते, ज्योत्स्नार्थ प्रतिपादकं यत् कौमुदीति पदं वर्तते, तस्य कौमुदीति पदस्य कुत्र लक्षणा भवति। तर्हि ग्रन्थे शब्दात्मकः यः ग्रन्थः वर्तते तत्र लक्षणा भवति कौमुदीपदस्य। केन संबंधेन भवति, सादृश्य संबंधेन भवति। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र केन संबंधेन भवति, सामीप्य संबंधेन भवति। तथा अत्र केन संबंधेन भवति, सादृश्य संबंधेन अत्र भवति। तर्हि कौमुदी इत्युक्ते ज्योत्स्ना चंद्रिका तत्सदृशः यः ग्रन्थः वर्तते, शब्दात्मकः यः ग्रन्थः वर्तते, तत्र लक्षणा भवति। अतः कौमुदीपदस्य अर्थः अधुना सञ्जातः ग्रन्थः। कौमुदीपदस्य अर्थः कः वर्तते, ग्रन्थः। कौमुदी इत्युक्ते ज्योत्स्ना तत्सदृशः ग्रन्थः। अतः कौमुदीपदस्य अर्थः सञ्जातः कौमुदी ग्रन्थः। अब पश्यन्तु, अधुना अन्वयः भविष्यति। यतो हि ग्रन्थस्य तु विरचनं कृतमेव वर्तते श्रीमता दीक्षितमहोदयेन। अतः तत्र किं वर्तते, ग्रन्थरूपार्थस्य बोधकं यत् कौमुदी इति पदं वर्तते, तस्य तु कर्मत्वस्य पदार्थस्य कौमुदी वाच्यस्य पदार्थस्य किं भवति, कर्मत्वेन भट्टो इच्छितनिष्ठ कर्तृता निरूपिका या वरिचन क्रिया वर्तते, तत्र अन्वयः भविष्यति एव। तत्र अन्वयस्य अनुपत्तिः न भवति। अतः भट्टो कौमुदी कर्मिका, भट्टो इच्छितनिष्ठ कर्तृता निरूपिका या विरचन क्रिया इति एवं रीत्या तत्र बोधः भवति। अतः अत्र कौमुदी पदस्य कुत्र लक्षणा संजाता वर्तते, कौमुदी ग्रन्थे वर्तते। ग्रन्थे शब्दात्मक ग्रन्थे किं जातं, लक्षणा वर्तते कौमुदी पदस्य। केन संबंधेन, सादृश्य संबंधेन। तत्र लक्षणापि द्विधा भवति, शुद्धा भवति, गौणी भवति। तत्र शुद्धा लक्षणा का इति चेत् सादृश्य, जहाँ पर सादृश्य से इतर संबंध से क्या हो, शक्य संबंध माने लक्षणा हो, वहाँ क्या होती है, शुद्धा लक्षणा होती है। और जहाँ सादृश्य संबंध से ही लक्षणा हो, वहाँ क्या होती है, गौणी लक्षणा होती है। तो यहाँ पर क्या है, सादृश्य संबंध से लक्षणा
है कि नहीं? कौमुदी पद की कौमुदी सदृश ग्रंथ में सादृश संबंधेन लक्षण, अतः अत्र गौणी लक्षण, इसीलिए क्या है यहाँ गौणी लक्षण वर्तते। यतो हि सादृश संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका भवति लक्षणा गौणी, अपि च सादृश्येतर संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका लक्षणा भवति शुद्धा लक्षण, यथा गंगायां घोषा। अतः अत्र गौणी लक्षणा वर्तते। कौमुदी पदे कीदृशी लक्षणा वर्तते? गौणी लक्षणा वर्तते। कुत्र लक्षणा वर्तते? शब्दात्मक कः या ग्रंथः वर्तते तत्र लक्षणा वर्तते। केन संबंधेन? सादृश संबंधेन। सादृश संबंध से कौमुदी पदार्थ का, कौमुदी का क्या होता है? जो चंद्रिकार्थवाचक जो कौमुदी पद है उसका क्या होता है? ग्रंथ रूप में शब्दात्मक जो ग्रंथ है उसमें लक्षणा हो जाती। अतः कौमुदी का अर्थ हो गया ग्रंथ। कौमुदी का अर्थ हो गया ग्रंथ। अब देखिए कौमुदी का अर्थ क्या हो गया? ग्रंथ। ग्रंथ कैसा अर्थ है? पुंस्त विशिष्टार्थ है कि स्त्रीत्व विशिष्टार्थ है कि नपुंसकत्व विशिष्टार्थ है? तो ग्रंथ तो क्या है? पुंस्त विशिष्टार्थ। अतः कौमुदी क्या हो गई? पुंस्त विशिष्टार्थ प्रतिपादक हो गया। कौमुदी शब्द क्या हो गया? पुंस्त विशिष्टार्थ प्रतिपादक हो गया, क्योंकि ग्रंथ अर्थ हो गया। कौमुदी का अर्थ क्या हो गया? लक्षणया ग्रंथ हो गया। अग्रंथ तो क्या है? पुंस्त विशिष्टार्थ है। अतः पुंस्त विशिष्टार्थ प्रतिपादक कौमुदी पद हो गया। अकौमुदी पद स्त्रीत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक नहीं रहा, जिससे क्या हो गया? कौमुदी में गीप कैसे हो गया? कौमुदी में गीप अब कैसे रहेगा? क्योंकि गीप तो स्त्रीत्वार्थ द्योते भवति। तर्हि अत्र तु पुंस्त विशिष्टार्थस्य बोधः भवति। यतो हि कौमुदी पदस्य ग्रंथे लक्षणा भवति चेत् किं भवति? तत्र कौमुदी पदस्य ग्रंथे लक्षणा भवति। अतः तत्र किं भवति? ग्रंथस्तु पुंस्त विशिष्टार्थः वर्तते। अतः तत्र पुंस्त विशिष्टार्थस्य प्रतिपादकं कौमुदी इति पदं वर्तते। तस्मात् स्त्रीत्वार्थस्य इदानीं द्योतता न भवति। अतः गीप् प्रत्ययः न भविष्यति। तर्हि कथं कौमुदी इत्यत्र गीप् वर्तते इति जिज्ञासा भवति। तर्हि तत्र वक्तव्यम् अभि च तत्र कुत्र लक्षणा भवति? ग्रंथे लक्षणा भवति। केन संबंधेन लक्षणा भवति? सादृश संबंधेन लक्षणा भवति। तर्हि कौमुदी सदृश ग्रंथः। तत्र कश्चित् वदति भो कौमुदी सदृश ग्रंथः यथा गंगायां घोषः इत्यत्र जल प्रवाह रूपः यः अर्थः तत्समीपः तटः भवति तद्वदेवात्र तत्र तु सामीप्यं तटे वर्तते। प्रवाहस्य तटेन सह किं वर्तते? सामीप्यं वर्तते इति सर्वैरपि दृश्यते। प्रत्यक्षेणैव प्रत्यक्ष प्रमाणेनैव सर्वैरपि तत्र दृश्यते यत् किमस्ति? गंगा पदार्थस्य प्रवाहः यः वर्तते तस्य तटेन सह सामीप्य संबंधः वर्तते। अत्र वक्तव्यं भो कथं चंद्रिका यः कौमुदी पदार्थः चंद्रिका वर्तते तस्य ग्रंथेन सह कः सादृश्यं किं वर्तते? यतो हि ग्रंथः शब्दात्मकः वर्तते। चंद्रस्तु किं वर्तते? बहु दूरे वर्तते। सा बहु वर्तते, बृहद् वर्तते, प्रकाशकः वर्तते, चमचमायमानः भवति। ग्रंथस्तु तथा न भवति। रात्रौ स्थाप्यतां तत्र किं न दृश्यते? कृष्णपक्षे तत्र ग्रंथस्य दर्शनं न भवति, किन्तु चंद्रस्य दर्शनं भवति। चंद्रस्य प्रकाशः भवति, ग्रंथस्य तु न वर्तते। एवमेव चंद्रः तु बृहद् वर्तते, ग्रंथस्तु किम् अस्ति? बहु लघु वर्तते। अतः कथम् अत्र भो कौमुदी चंद्रिका सदृशः ग्रंथः कथं वर्तते? तर्हि तत्र वक्तव्यं भो
सादृश्यं तु वर्तते एव। तापसामकत्वेन, आह्लादजनकत्वेन, प्रकाशकत्वेन इति नाना रूपेण तत्र सादृश्यं तु वर्तते एव। एवं न वक्तुं शक्यते यत् सादृश्यमेव नास्ति। यद्यपि कौमुदी इत्यस्य अर्थः ज्योत्स्ना भवति, तेन सह सादृश्यं, तर्हि ज्योत्स्ना प्रकाशस्वरूपा भवति, तेन सह कथं किं वर्तते, सादृश्यं वर्तते चेत् तत्र वक्तव्यं तापसामकत्वेन, आह्लादजनकत्वेन, प्रकाशकत्वेन च सादृश्यं वर्तते। कथमत्र भो? कथमत्र भो? हरिनारायण जोशी जी, धन्यवादः। अत्र बहवः विद्वांसाः सन्ति, तेषां समेषां स्वागतं व्याहरामि। पुनः तत्र मम गुरवः अपि सन्ति, तेषां समेषामपि तेषामपि स्वागतं करोमि। तत्र किमस्ति, अतः तत्र कौमुदी पदस्य एवं भूतं तत्र सादृश्यं वर्तते, प्रकाशकत्वेन, आह्लादजनकत्वेन, तापसामकत्वेन च तत्र सादृश्यं वर्तते। आप लोग हैं, मन कर रहा कि पढ़ाते ही रहें, बोलते ही रहें, लेकिन समयस्य बाध्यता वर्तते। अतः अधुना समयः अधिकः भवति, अतः अधिकं न वदामि, एतावदेव वदामि। यतोहि अद्य किञ्चित् विलम्बः सञ्जातः आसीत्, तत्र श्वः आरभ्य पुनः समयेन भविष्यति। तत्र आह्लादजनक तत्र सादृश्यं कथं भवति, केन केन धर्मेण भवति, यतो यत्र सादृश्यशब्दस्य प्रयोगः भवति तत्र सर्वत्रापि एवं भवति। सादृश्यं च केन धर्मेण इति जिज्ञासा भवत्येव। अतः तत्र सादृश्यं केन धर्मेण गृह्यते इति तु भवत्येव। तत्र जिज्ञासायाः निवृत्तिः करणीया। तत्र केन धर्मेण इति चेत् वदामि, यतो प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूत धर्मेणैव सर्वत्रैव सादृश्यं गृह्यते। तर्हि यत्र कथं प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूतो धर्मः, आह्लादजनकत्वरूपः धर्मः, तापसामकत्वरूपो धर्मः, प्रकाशकत्वरूपः धर्मः इति एतत् कथं भवति, कथं च तत्र सादृश्यं वर्तते, सादृश्यस्य च किं लक्षणं वर्तते इति एतत् सर्वं श्वः विचारः भविष्यति। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। पुनः श्वः बहु विचारः भविष्यति। तत्र अधुना तु जातः वर्तते यत् क्रिया विरचनक्रियया किं भवति, आक्षेपः भवति कर्तृपदस्य, तेन भट्टो इच्छिति इति आगच्छति, अतः भट्टो इच्छितेन विरच्यते इत्येवं रीत्या वाक्यस्य निष्पत्तिः भवति। तदनन्तरं कौमुदीपदस्य लक्षणापि सञ्जाता वर्तते। ततः स्वसदृशग्रन्थे, अतः अत्र का लक्षणा वर्तते कौमुदीपदे, गौणीलक्षणा वर्तते इत्यपि प्रतिपादितं वर्तते। पुनः तत्र सादृश्यं च केन धर्मेण, तर्हि तत्र आह्लादजनकत्व, तापसामकत्व, प्रकाशकत्व इति नानाधर्मेणापि सादृश्यं गृहीतुं शक्यते। अतः तत्र एवं रीत्या तत्र सादृश्यनियामकाः धर्माः सन्ति, तेन धर्मेण सादृश्यं गृहीतुं शक्यते। 9 से 10 मेरे गुरुजी हैं, सुधाकर गुरुजी, उनको बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। उनके चरणों में हमको दयालु में पढ़ाए हैं और वो भी आज उपस्थित हैं। ये बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात है और उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। इसी तरह सभी गुरुजनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हम यही भगवान विश्वनाथ से कामना करते हैं, आप सबका आशीर्वाद रहे। और आज इतने ही हम बोल करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर से 9 से 10 ये पाठ चलता है और ये पाठ चलता रहेगा। ये ऐसा
मदन मोहन, प्रोफेसर मदन मोहन झा गुरु जी का वचन है और उनका आदेश है। अतः ये पाठ हम यथाशक्ति कोशिश करेंगे कि इसको हम कम से कम पंचसंधि और इधर कारक स्त्री प्रत्यय वगैरह और इधर अजंत वगैरह भी जितना हो सकेगा ये हम कम से कम इसको जरूर ही करें, ये प्रयास रहेगा मेरा। और आगे कुछ पकड़ेगा रफ्तार होगा, थोड़ा सा और समय दे देंगे। थोड़ा मंगलाचरण है, मंगलाचरणं समीचीनं भवति चेत् तत्र विघ्नस्य ध्वंसः भवति, तेन किं भवति विघ्ननाशः नाशात् तत्र सर्वं भविष्यति। अतः मंगलोच्चारणोपरि समीचीनतया विचारः स्यात्। अस्तु, अग्रे पुनः श्वः मिलामः। समेषां भवतां धन्यवादः। हरि ओम्, नमो नमः।